हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर वन हमने थियरी कर ली है ऑलरेडी। नाउ चैप्टर नंबर टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। Introductions. Many transactions take the place in the business. Effect day-to-day transactions are recorded in accounting transaction in the books of accounts. Accounts transaction may be cash transaction, credit transaction. The system is based on upon the fact there are two aspects of every business transactions, mainly two types of business transactions: economic transaction and non-economic transactions. Now what is economic transactions? The economic transaction, the transaction which can be measured in terms of money, that is economic transactions, which can be measured in terms of money. For example, uh, paid salary, take the service, purchase goods and pay the money, purchase furniture and paid the money. That is a economic transaction. Means every transaction is measured in terms of money, and then it's considered as a business transactions, economic transactions. Okay, whereas a receipt payment of money is involved are known as economic transactions. From viewpoint of business, economic transactions will be recorded in the books of accounts, uh, uh, because it can be measured in terms of money. Non-economic transactions, those transactions which cannot be measured in terms of money, where receipt payment money is not involved, are known as non-economic transactions. Okay, non-economic transaction will not recorded in the books of accounts. Books में record नहीं करेंगे. Received order for supplying goods of rupees 20,000, appointed a clerk with salary rupees 20,000. It is a non-economic transactions. Yeah, it is a non-economic transaction. This transaction will not recorded in the books of accounts. Only economic transaction is recorded in the books of accounts. Types of economic transactions: cash transactions, transaction of for goods and services, and transactions involving the receivable and payables. Now, कैश ट्रांजेक्शन्स, उसमें गुड्स ट्रांजेक्शन्स के होगी, सर्विस ट्रांजेक्शन्स है, एसेट्स ट्रांजेक्शन है, एंड डेबिट टैप ट्रांजेक्शन है. लाइक गुड्स ट्रांजेक्शन, व्हेन वी परचेज गुड्स या सोल्ड गुड्स फॉर कैश, that is a goods transaction for cash. Service transaction, we taking the service and pay the money, like pay the salary, pay the wages, purchase of assets on cash, that is the assets transactions. And debts transactions mean amount payable, yeah, due but not paid, now is paid through the cash, that is a cash transaction. Transaction of goods or services, and transaction involving the receivable and payables. Transaction for goods and services, service transactions, assets transactions mainly are involved. Economic transactions and non-economic transactions, difference between is there. Economic transaction which can be measured in terms of money. Non-economic, the transaction cannot be measured in terms of money. Second, it is recorded in the books of account, is not recorded in the books of accounts. थर्ड एग्जांपल दिया है यहाँ पे, कैश ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांजेक्शन ऑफ इन्वॉल्विंग द रिसीव एंड पेबल्स. देयर इज नो एनी types of non-economic transactions. Example, goods sold rupees 25,000, purchased goods of rupees 80,000. यहाँ पे example, goods received order and signed goods of rupees 3,000. That is a non-economic transactions. Now business transactions. Business transactions classified the economic transaction and non-economic transactions. Economic transaction, non-economic transaction are not recorded in the books of account. Therefore, there is no importance in accounts. Now economic transactions. Economic transactions: cash cash transaction, credit transactions, internal transaction and external transactions. Now cash transaction and credit transaction में cash transactions, credit transactions and others transactions, internal transactions and external transactions. क्लियर? ये फ्लो चार्ट हो गया आपका ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. फिर से समझ लेते हैं.
Business transactions, there are two types of transaction: economic, non-economic transactions. Non-economic transactions are not recorded in the books of accounts, therefore we are not discussing here. Economic transactions. Economic transaction is cash and credit transaction, internal and external transactions, cash and credit transaction, cash transaction, credit transaction, other special transactions, internal and external transactions, are internal transaction and external transactions. Now cash transaction. Business transaction can be classified another way also: cash transaction and credit transaction. Now where the cash is involved, cash balance is affected. When cash balance, your cash balance increase or decrease, that is a cash transactions. Okay, the transaction in which there is a receipt payment is involved, receipt payment is involved of cash, is cash transaction. Cash balance is affected, cash balance affect करेगा यहाँ पे आपका, that is a cash transactions. Clear? your Due to these transactions your cash balance is affected, means your cash balance increase or decrease, that is a cash transactions. Okay, now some example. Now the first transactions, if goods of rupees 50,000 are purchased for cash, देखो cash word is mentioned, therefore cash transactions. Second if goods of rupees 70,000 are sold for cash, clear? तो यहाँ पे देखो, if goods of rupees 70,000 are sold for cash word is mentioned here, cash word is mentioned, therefore it is a cash transactions. clear? Cash is affected दोनों में, फर्स्ट में भी कैश अफेक्ट कर रहा था, तो सेकंड में भी कैश अफेक्ट कर रहा है. ड्यू टू द फर्स्ट ट्रांजेक्शन कैश डिक्रीज हो रहा है, सेकंड ट्रांजेक्शन कैश बैलेंस हमारा 70,000 से इंक्रीज होगा. नेक्स्ट है पेड सैलरी ₹9,000. पेड सैलरी, when we paid salary of ₹9,000, paid, always paid in cash, that is example. Due to the paid, the cash balance is decrease. Clear? If the balance of the bank balance also is affected due to some transaction, then also is cash transaction. Your cash balance or bank balance is affected, that is a cash transaction. Clear? If due to the any transaction, if your bank balance is affected, bank balance increase or bank balance decrease, that is also cash transaction. यहाँ पे example, if goods of ₹50,000 are purchased and amount, yep, amount paid by, made by check. चेक आप चेक से पे कर रहे हो, तो इट इज योर कैश ट्रांजेक्शन. क्लियर? पेड बाय चेक, चेक is a mention, that is a cash transaction. Now credit transaction. In this type of transactions, money is not paid immediately. It's not paid immediately, but it's paid on future date. Like purchase as sale of transaction of assets of goods and services. Many money for this purchase sales, it to be paid in future. It's not paid right now, but it's paid afterward, in future date. Clear? For those transactions, relation of debtors and creditors come to existence. Due to these transactions, debtors and creditors के relations create होते हैं. Clear? Credit transaction means amount is not paid immediately, it paid, yeah, postponed for some times, that is a credit transaction. In brief, purchase and sales of assets of goods and services made at present, but the money is payable or receivable in future. These transactions are recognized as a credit transactions. ना देखो यहाँ पे credit transactions में goods of ₹50,000 are purchased from नितिन. गुड्स परचेज किया है, आपको क्वेश्चंस में ही आंसर मिलेगा. जो क्वेश्चन है उसमें आपको खाली क्वेश्चंस को क्वेश्चंस करना है. कैसे करना है देख लो. गुड्स ऑफ ₹50,000 आर परचेज फ्रॉम नितिन. गुड्स परचेज किया, यस. किसके पास से परचेज किया? फ्रॉम नितिन. पेमेंट किया है? नहीं किया, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, देन इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस. क्लियर? नाउ सेकेंड, if goods of ₹70,000 are sold to Anil for credit, लिखा है credit is mentioned here, credit is also, credit is mentioned here. देखो credit transaction, this is credit is mentioned, that is a credit transaction.
बट अगर क्रेडिट मेंशन नहीं किया है फिर भी इट इज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन. कैसे? इफ गुड्स आर विद 70,000 आर सोल्ड टू अनिल. सोल्ड किया, किसको सोल्ड किया? अनिल को. अनिल ने पेमेंट किया? नहीं किया. दैट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, गुड्स ऑफ रुपीज 50,000 आर परचेज फ्रॉम विकास एंड अमाउंट विल बी पेड आफ्टर 1 मंथ. पेमेंट अभी किया? नहीं किया. कब करेंगे? आफ्टर 1 मंथ, मीन्स इन फ्यूचर डेट. दैट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. ठीक. Now other transaction that is not falling above the mentioned two types are special transaction. There are neither cash transaction nor credit transaction. These are special transactions. These transactions are recorded in the books, like good destroyed in accidents, good thefts, goods given for donations, goods given for advertisements, asset turning defective or useless. That is a other special transactions. Okay, now internal transaction and external transaction. Internal transaction within a business, that is called internal transaction. Transaction, there is no need to other parties. The transaction would take place within a business. This transaction are recorded in the books of accounts. Depreciation or asset lost due to natural calamities are known as a internal transactions. Now external transaction. This transaction are between business and other parties. That means third party. There are economic transaction of the business. These transactions are recorded in the books of accounts. Sale of goods, wages paid, work to worker, salary paid to employee, interest received from the bank, amount paid for insurance premium, purchase of goods, purchase of assets, cash deposited in bank. ये सब external transaction है. Now economic non-economic transaction. In the books of accounts business, only economic transactions are recorded, but non-economic transactions are not recorded. So what is a non-economic transaction? Non-economic that those transactions which cannot be measured in terms of money, that is a non-economic transactions. Clear? Now अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखेंगे. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को अंडरस्टूड करते हैं, क्या किस तरह से करेंगे. क्लियर? तो देखो यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब whether the following transactions are economic transaction और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. हमको डिस्क्राइब करना है. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है विथ रीजंस. क्लियर? ये क्वेश्चंस दिए हैं तो हम 1 by 1 चेक करते हैं एंड कौन सा ट्रांजेक्शन है वो वेरीफाई करते हैं. क्लियर? ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे हम. सीरियल नंबर्स, ट्रांजेक्शंस, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एंड रीजन. चल नाउ फर्स्ट ट्रांजेक्शंस. एसेट्स परचेज फॉर ₹10,000. देखो एसेट परचेज की और 10,000 हमने पे कर दिए तो एक्सचेंज हुआ. दैट इज ए इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस. क्लियर? कैश पेड अगेंस्ट एसेट्स. यस. सेकेंड, एसेट्स परचेज फ्रॉम राधा ₹12,000 ऑन क्रेडिट. हमने परचेज किया. क्या परचेज किया? एसेट्स परचेज किया, बट पेमेंट किया अभी नहीं किया, बट पेमेंट करने वाले हैं. यस. तो इट इज अ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. रिलेशन ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. क्लियर? पेमेंट अभी नहीं हुआ, बाद में करेंगे. तो कौन से रिलेशन क्रिएट हुए? डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के. एसेट सोल्ड ऑफ ₹20,000. आपने एसेट सोल्ड की. आप एसेट सोल्ड करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. कैश रिसीव्ड अगेंस्ट एसेट्स. नेक्स्ट फोर्थ, एसेट सोल्ड टू मीरा ऑन क्रेडिट फॉर ₹22,000. आपने एसेट सोल्ड की. किसको सोल्ड की? मीरा को. पैसे मिले अभी नहीं. तो कौन से रिलेशन क्रिएट हुए? डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. तो देखो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन से रिलेशन ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स इज क्रिएटेड. क्लियर? फिफ्थ, ₹8,000 पेड फॉर वेजेस. वेजेस पे किए. कैश गोज आउट हुआ, कैश पेमेंट हुआ. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. कैश पेड अगेंस्ट सर्विसेज. हमने जो सर्विस ली उसके अगेंस्ट में हमने कैश पे कर दिया. 6, ₹9,000 रिसीव्ड फॉर रेंट. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. क्यों? हमें कैश रिसीव्ड हुआ अगेंस्ट सर्विसेज. हमने जो सर्विस दी उसके पैसे मिले हमको. 7, लाइबिलिटी ऑफ ₹15,000 इज सेटल्स. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. क्योंकि लाइबिलिटी इज पेड
इन कैश, हमने जो लाइबिलिटी थी वो हमने पे कर दी, कैसे पे कर दी, तो कैश। 8 रिसीवेबल ऑफ रुपीज 18,000 इज रिसीव्ड, रिसीवेबल थे, अमाउंट रिसीवेबल थी, नाउ इज रिसीव्ड, तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मीन्स रिसीवेबल इज रुपीज रिसीव्ड इन कैश, दैट इज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट है 9th, an order received to supply goods of rupees 10,000। नाउ देखो ऑर्डर रिसीव्ड हुआ है, हमने गुड्स सप्लाई किया नहीं किया, पैसे मिले नहीं मिले, खाली ऑर्डर ही मिला है, तो दैट इज ए नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, बिकॉज देर इज ए नो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कोई गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हुआ ही नहीं, तो दैट इज ए नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। क्लियर। नेक्स्ट, प्लानिंग इज मेड टू बाई वन एसेट्स, हमने प्लानिंग किया है कि हम एक एसेट्स बाई करेंगे, अभी प्लानिंग किया है, बाई किया नहीं किया, पेमेंट हुआ नहीं हुआ, जस्ट प्लानिंग किया है, तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिकॉज ऑफ देयर इज अ नो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर। 11th, एनके सेल्स ऑफ डिस्कसिंग इन अ मीटिंग अरेंज विद द सेल्समैन, हमने सेल्समैन के साथ सेल्स को किस तरह से इंक्रीज किया जाए उसके साथ में मीटिंग की, कौन सा ट्रांजेक्शन है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर।